Hello, everyone. Good afternoon. Can you see and hear me? I think you can see and hear me. Ishita, good afternoon. Good afternoon, Ishita. So, welcome to the 20th January Hindu welcome to the 20th January's Hindu editorial analysis. I am Vaishnavi, and today we are going to be discussing the Hindu editorial of the 20th of Jan. I'm sorry I wasn't keeping well, so hence the classes could not happen for a day or two. So, Mesh, hi, good afternoon, namaste. I'm fine now. I'm fine. I'm absolutely fine now. Just the cold is still there, but I'm still fine. I'm fine. Thank you so much for asking. Let me just inform on the group that I am live. All right, so let's get started with the session. Okay, so let's get started with the session. Before we get started, this is my Telegram channel. If you have not joined, hi Namasha, good afternoon. If you have not joined the channel yet, please do subscribe to the channel so that you get to know when and where my classes are happening. So let's get started with the words of today. आज हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन सारे वर्ड्स सिंपल वर्ड्स हैं ओके मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट वी हैव टेकन आर सिंपल वर्ड्स जो आपको पहले से प्रोबेबली मीनिंग पता होगा या आपने बहुत बारी उसको यूज होते हुए देखा होगा ओके सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग Namasha, I am fine now. Just the cold is still there. It persists and it persists for long, as always. But otherwise, I do not have fever and body pain. So thank you, Namasha, for asking. All right. So the first word that we have is harmony. Harmony is generally related to, peace and a soothing sort of peace that persists, right? So यहाँ पर हम इस situation में harmony का मतलब क्या लिए हैं? It is a situation in which people are peaceful. Okay, people are peaceful and agree with each other, or when things seem right and suitable together. Okay, so things are in harmony when you say, मतलब चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहा है, अग्री हो रहा है, एंड सारा सिनेरियो जो है suitable सिनेरियो हो रहा है. Okay, everything that is going, if two things are going parallelly, they are going in perfect harmony. मतलब क्या हुआ? They are going in a suitable way together. Okay, so that is harmony. Okay, this is the first word. Then we have strife tone. Okay, so strife ridden या strife tone दोनों use करते हैं. Okay, we also use strife ridden.
ऑल राइट, सो इट इज एन एडजेक्टिव, ओके। सो एक जगह के बारे में बताया जा रहा है कि इट इज स्ट्राइफ टोन, ओके, या स्ट्राइफ रिडन, ओके। मतलब उस जगह पे बहुत ज्यादा डिवाइड था। क्यों डिवाइड था उस जगह पे? क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा था, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे थे, ओके। बहुत अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट था लोगों के बीच में, ओके। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्ट्राइफ टोन। मतलब बेसिकली पूरे जगह में people had conflicts and violence was prevalent in a certain area. क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में नहीं थे लोग। एक सर्टेन कम्युनिटी वाज नॉट इन अग्रीमेंट विद अनदर सर्टेन कम्युनिटी, ओके। सो स्ट्राइफ टोन मणिपुर के लिए यूज किया गया है इस एडिटोरियल में, एंड विच इज राइटली सो, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट और डिसेंट, ओके, दैट इज स्ट्राइफ टोन। दिस इज अ वर्ड दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर। सो स्ट्राइफ टोन, ओके। स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओके, जैसा वर्ड समझ में आ रहा है वैसे ही है, ओके। स्ट्राइव टू सॉरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इज अ प्लेस और एरिया वेयर अ पर्टिकुलर बिलीफ और एक्टिविटी इज कॉमन, ओके। सो या तो हम स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे जगह को बोलते हैं अगर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ओके, दैट दिस प्लेस हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओके, मतलब कंप्लीटली फोर्टिफाइड है, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है इस जगह को, ओके। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। बट इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस और एन एरिया वेर अ पर्टिकुलर बिलीव और एक्टिविटी इज कॉमन, ठीक है। कोई एक सर्टेन बिलीव, एक सर्टेन विश्वास या एक सर्टेन एक्टिविटी जो बहुत कॉमन है, मतलब प्रेवलेंट है, ओके, इज स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओके। नेक्स्ट इज एलाई। एलाई हम बहुत बार देख चुके हैं। एलाई एलाइज हो जाता है, ओके, इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एलाई, ओके। एलाई इज समवन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट समवन एल्स, ओके। सो अगर मैं आपको हर चीज में सपोर्ट कर रही हूँ, आपको आपके हर डिसीजन में आपको बोल रही हूँ कि ये डिसीजन जो इन्होंने लिया है बहुत बढ़िया लिया है, ये जो इनका मूव था ये बहुत बढ़िया था, तो आई बिकम योर एलाई, ओके। आई एम योर सपोर्टर, आई एम योर एलाई, ओके। Now drum up something, okay? Drum up something is a phrasal verb, okay? Phrasal verb hai. Drum up, okay? It basically means to encourage the development of something, okay? किसी चीज का development को encourage करना is to drum up, okay? So to encourage the development of something is to drum up something, okay? Bonjour, Ravneet. Bonjour, bonjour. Um, the harmony between it should be my friends and I, okay, is prophylactic against section D, guys, okay. Ishita, very nice, Somesh, good job. Ishita, the harmony between the two tribes lasted only for a short time. Very nice, Ishita, good job. मेरे बड़े भाई, hello, let her go, ma'am. Do you remember me? You're looking cute after you shortened your hair. I did not. Did I? Long back, I did that. मेरे बड़े भाई, yes, I remember you. Yeah, you asked me to sing Let Her Go. Ishita, her allies in the marketing team betrayed her as soon as they found a better opening in another team. Very nice, Ishita. Good job. Good job. Bravo. All right. So drum up का मतलब क्या होता है? To encourage the development of something. ठीक है? तो they drummed up the support in a certain area. They uh, drummed up the colony, drummed up the place. They drummed up the school vicinity or school environs. Okay, so drum up is basically to encourage the development of something. Okay, so उस जगह की उन्नति में को बढ़ावा देना, ओके, किसी जगह की उन्नति को बढ़ावा देना, ओके, इज टू ड्रम अप समथिंग, ओके। देन वी हैव प्लैंक। प्लैंक इज you know the plank, okay. Plank is this as well, okay. But when we are talking about plank as this is also plank as a noun only, but it's basically a flat raised surface, okay, is a plank. But हम exercise में भी देखते हैं that you make a plank, okay, so that's a good core exercise by the way.
but plank over here is an important principle. ठीक है, important principle on which activities of a political or other group are based. Okay, कोई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसपे कोई पॉलिटिकल ग्रुप बेस्ड है या कोई अदर ग्रुप, ओके, नीड नॉट नेसेसरली बी अ पॉलिटिकल ग्रुप, बट यहाँ पर पॉलिटिकल ग्रुप के लिए यूज किया गया है. सो प्लैंक इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑन विच द एक्टिविटीज ऑफ अ पॉलिटिकल और अदर ग्रुप आर बेस्ड. ओके, सो दैट इज अ प्लैंक. ओके, एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिस चीज पे वो बेस्ड है. ओके, सो लेट्स से दिस is the principle जिस चीज पे this certain political party is based. Okay, this political party is based. Okay, so that is the plank over here. Okay, hinge आप जानते हो, hinges are generally on a door. Okay, जिसके जो help करता है the door to open and close. Okay, that is a hinge. It supports the door. अब hinge on something, right? तो अगर किसी चीज पे hinge on something, okay, this completely hinges on his decision, or this completely hinges on what he has to say. Okay, so hinge is a verb over here which you can change this to hinges and hinging. Okay, or hinged. So depending entirely on. Okay, so depending entirely on is the meaning. Hi Harshika, good afternoon. Good afternoon. Okay, then we have counter. Counter is to speak or act in opposition to. Okay, counter something is to speak or act in opposition to something. Okay, so let's say he countered the decision that I made. Okay, so he countered the or she countered the decision that I made, was basically she acted in opposition of the decision that I made. Okay, opposite decision जो मैंने बोला था कि let's say ये करना है, तो उसको ना करके कुछ और कर दिया उन्होंने. ओके, जानबूझ के उसका ऑपोजिट कर दिया. ओके, ये ना करके वो कर दिया. ओके, सो दैट इज टू काउंटर समथिंग. ओके, दिस इज अ वर्ब फॉर्म. The political leaders are trying their best to strike. Mhm, to strike down होना चाहिए the people disturbing harmony of the strike down the people disturbing the harmony of the country. It looks like all politicians, it looks like all politicians now have religious allies to back them up, especially in the states where there is a stronghold of religion. Full stop. Very nice. It is sad how the leaders of today are drumming conflict up. Very nice. Very nice, Ramneet. Good job. Somesh, the kerosene music creates a harmony between the flagitious nature and Michael Myers. You are obsessed with Michael Myers. Nice. Good job, Somesh. Then we have potency. Potency किसी चीज का, अगर हम किसी पावर के बारे में बात करें, okay, to check the potency of this political party या that political party. So the power of something to influence or make an impression. Okay, so the power of something to influence or make an impression is potency. Okay. All right, then we have mobilization. Mobilization is a noun. Okay, mobilization एक noun है जिसका मतलब होता है the act of organizing or preparing something such as a group of people for a purpose. Okay, so mobilization का मतलब generally troops को arrange करना होता है to get going into to get them ready for a war situation or something like that. बट यहाँ पर मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइज करना या प्रिपेयर करना समथिंग. ओके, प्रिपेयरिंग समथिंग सच एज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्पस. ओके, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको प्रिपेयर करना होता है मोबिलाइजेशन. ओके, रेडी करना एक ग्रुप ऑफ पीपल को फॉर अ सर्टेन पर्पस. ओके, कंटेस्ट इज अ वर्ब. ओके, कंटेस्ट करना मतलब engage in a competition to attain
a position of power. Okay, so contesting in an election, this person contested in the previous election, or this person is going to contest in a certain election in the upcoming election. Okay, so basically it means to engage in a competition to attain power. All right. Not yet, Somesh. Somesh, I did not watch Halloween. But I know it is very famous. It is very famous. The whole Michael Myers thing is very, very famous. So I know what you're talking about. I just need to watch it. I have been potencied by your French so much that I have spent 24 hours learning French, and I'm sure I am obsessed and can't stop now. Good job, Ravneet. Good job. Good job. Boom, boom. The beauty pageant contests, contest, contest, that is contest, okay? This is contest, okay? Verb form hota hai contest, that is contest, okay? So that is the noun form, okay? So aap jo use kar rahe ho Ishita, that is the noun form. The beauty pageant contest is a platform for women to gain self-confidence if they use it in the right way. Let's see. Let's see. Okay. All right. Now this is the second bit of it, okay? All right. Then we have alleged, okay? Alleged is something that we already know. ये बहुत common है, okay? Said without proof is the meaning of alleged, okay? So alleged adjective है यहाँ पर. Alleged uh, criminal or alleged culprit, okay? So said without proof to have taken place or to have a specified illegal or undesirable quality, okay? So the alleged man, okay, the alleged man who took the life of the alleged criminal who took the life of a certain person is now in prison. Okay. Marginalization is a noun. Okay, this is a new word जिसके बारे में हमने नहीं discuss किया है. Okay, so marginalization is treatment of a person, group or concept as insignificant or peripheral. Okay, किसी ग्रुप को या किसी पर्सन को ऐसे ट्रीट करना या किसी कॉन्सेप्ट को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो इनसिग्निफिकेंट है. ओके, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है. ओके, दैट इज मार्जिनलाइजेशन. ओके, सो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, मार्जिनलाइज tribes होते हैं. Okay, so marginalization is the noun form. Okay, dissociate is to, especially in abstract contexts, disconnect or separate. Okay, dissociate is disconnect or separate. Okay, disconnect करना या separate हो जाना. Okay, so that is the verb form. और ये abstract context में मतलब literally ऐसा नहीं होता है. It is generally used for policies or frame of mind. Okay, so ऐसे abstract concepts के लिए use करते हैं dissociate. Okay. Hello, Apurva. Hello, hello, hello. You still have my picture as your DP. How nice. Salute. All right.
Then we have impending. Okay, impending danger, generally bolte hain. Okay, the word that we combine with impending is impending danger. Okay, impending of iska matlab kya hota hai, of an event regarded as threatening or insignificant. Okay, कोई भी event को अगर हम ऐसे regard करेंगे as threatening or insignificant, about to happen. Okay, so अबाउट टू हैपन. ओके, जो जनरली नेगेटिव चीज जो आने वाला है. ओके, नेगेटिव चीज जो आने वाला है उसके लिए यूज करते हैं इम्पेंडिंग. ओके, सो अगर कोई डेंजर आने वाला है. ओके, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इम्पेंडिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव. ओके, सो वी यूज इट फॉर समथिंग नेगेटिव दैट इज गोइंग टू कम. ओके, सो threatening या insignificant, about to happen, forthcoming is the forthcoming, या about to happen is the meaning of impending. Okay, कोई day Vahek, कोई day. Your comment, Somesh. That's why I ignored it, Somesh. Because it was ridiculous. Maxi, it is Maxi, Maxi. Okay, so ugh. No wonder I ignored it. ओके, देन सोलली. ओके, एल वाई आ रहा है. सो सोल भी हम बोलते हैं, सोल पर्पस ऑफ समथिंग, और दिस इज सोलली फॉर सर्टेन पर्पस. ओके, सो दिस इज द एडवर्ब फॉर्म, नॉट इन्वॉल्विंग एनीवन और एनीथिंग एल्स, ओनली. ओके, इट बेसिकली मीन्स ओनली. ओके, सो सोलली रिस्पॉन्सिबल, ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस chaos. ओके, और शी इज solely responsible for all this trouble. Okay, then we have disregard. Okay, disregard something is the verb form. Okay, merci beaucoup. 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 Very nice. Wow, Apurva is also learning French. Again, hence ignored, Somesh. Okay, disregard something is pay no attention to, ignore. Okay, so I disregarded Somesh's comment. Somesh's comment. I disregarded Somesh's comment. Bienvenue. Okay. Bienvenue. Very nice, Ramesh. Men often disregard their female counterparts' opinions. Very nice, very nice. Good job, Ishta. Good job. So, pay no attention to, ignore. Okay, pay no attention to or ignore. Okay, so this is the verb form, disregarded, disregarding. You can change it to in these forms. Okay. Then we have counterproductive. Okay, counterproductive is, counter हमने अलग से देखा था. Counterproductive is an adjective जो हमने पहले कर लिया है. Okay, we have done this before. It is having the opposite ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट. ओके, आप चाहते थे कि कुछ ऐसा हो लेकिन उसका ऑपोजिट हो गया. ओके, आप चाहते थे कि ये करोगे आप तो बहुत अच्छा होगा. ओके, लेट्स से मेरी टीचर बहुत खुश होगी अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे, तो पता चला टीचर ऑफेंड हो गई. ओके, अगर आपने कुछ कहा और टीचर ऑफेंड हो गई, सो दैट वाज काउंटर प्रोडक्टिव. ओके, द डायलॉग वाज काउंटर प्रोडक्टिव इन दैट केस. Ideology. Ideology is a noun. Okay, ideologies is the plural form. Okay, iska plural form hota hai. It is not like information. Sorry, information. So ideology is a system of ideas or ideals. Okay, especially one which forms the basis of economics or political theory or and policy. Okay, so इस चीज पे ये पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड है. ओके, इस वैल्यू पे ये, या इस आइडियाज पे ये पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड है, या इस आइडियोलॉजी पे, मतलब इन इन आइडियल्स पे बेस्ड है ये पॉलिटिकल पार्टी. ओके, सो दैट इज आइडियोलॉजी. नहीं नहीं सोमेश, मैं ऑफेंड नहीं होगी. मैं इसमें तो आपका आपका नाम भी नहीं लिया मैंने. ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैं तो टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो एजुकेटर हूँ सोमेश.
मैं एग्जाम्पल दे रही थी एंड दिस हैड नथिंग टू डू विथ यू और मी. ओके. ऑल राइट. All right. Then we have traverse. Okay. Traverse is basically travel across. Okay. Traverse or through. Okay. किसी चीज से पार जाना. Okay. Is traverse. Okay. So verb form है traversed, traversing. Okay. Is the meaning. Okay. Sorry. Is the you can change it into these forms. Okay. Travel across or through. Okay. Reinforce. Okay. Reinforce is reinforce. Reinforcement is the noun form. Reinforce is the verb form. Right. So strengthen or support an object or substance, especially with additional material. Okay, that is reinforce. बहुत कम चीजें मुझे ऑफेंड करती है सोमेश, and definitely not something that you will say. I'm sure of that. All right, so these were the words. So the words that we saw were harmony, strife, tone, stronghold, ally, drum up something, plank, hinge, counter, potency, mobilization, contest, alleged, marginalization, dissociate, impending, solely, disregard, counterproductive, ideology, traverse, and reinforce. All right. So congratulations to Yashashvi Dhakar with All India rank 8. And these are our other top rankers who have made it to the top 80 NLU. Unacademy Law Admission Test होने वाला है. That is happening on the 20th. That is today and 21st January. भूलना मत. It is happening at 4 p.m. Make sure that you scan this QR code and enroll yourself. Spartan Batch is a batch for CLAT and ALIT. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. Then Maestro batch is a batch for MHCT and CUT UG 2024. You can use my code Vaishnavi10 again to enroll in this batch. I'm taking English language in this batch, so you can enroll using my code. CLAT Iconic के फायदे क्या है? You get everything that you get in plus raise a hand feature, plus live mentoring session, plus detailed physical notes that will be delivered at your doorstep, plus printed mock test that will be delivered at your full length mock test that will be delivered right at your doorstep, and offline mock test at our academy center. All right, so pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Pens and highlighters out. Let's get started with the editorial of today. Distant goal. Okay, that is the title given. Okay, then we have the conclusion. Rahul Gandhi needs to do more than project himself as PM Modi's challenger. Okay, तो basically conclusion क्या है इस पूरे एडिटोरियल का कंक्लूजन क्या है ऑथर के हिसाब से, ऑथर ने क्यों लिखा है ये पैसेज टू से दैट कि राहुल गांधी को बस अपने आप को एज ही शुड नॉट जस्ट प्रोजेक्ट हिमसेल्फ कि मैं आई एम अ चैलेंजर ऑफ Prime Minister Modi. He has to do a lot more than that, okay, to win the election, if he wants to win the election, okay. So that is the conclusion. Let's move on to the main idea, okay. What the editorial starts with: the theme of the second edition of Congress leader Rahul Gandhi's cross-country journey is on justice, while it retains the call for harmony on the first. Okay, so basically अब उनका जो second cross country journey है, पहला it was vertical, now it is horizontal. Okay, so इनका जो ये जो second phase of the journey है, okay, this is पहले इसका मकसद क्या है? जस्टिस है. ओके, ही इज सेइंग इसका मकसद क्या है? इस क्रॉस कंट्री जर्नी का मकसद जस्टिस है, और पहले वाले का मकसद हार्मनी था. ओके, so this becomes the main idea. Okay, this is what the author is going to be talking about, that about Rahul Gandhi's cross country journey. Okay, labeled the Bharat Jodo न्याय यात्रा.
इट बिगैन इन स्ट्राइफ टोन मणिपुर। ओके, सो अब इसको क्या लेबल किया गया है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ओके, न्याय इज जस्टिस, राइट? सो इसको भारत जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ओके, he has made it, and it began कहाँ से शुरू हुआ? मणिपुर से शुरू हुआ, and will conclude in Mumbai. Okay, मणिपुर से मुंबई। Okay, if I do this, it looks opposite, so probably okay. Will conclude in Mumbai on March 20th after covering 6,713 kilometers across 15 states. Okay, so 15 states he will be covering, okay, and 6,713, these are the details, okay, और conclude कब होगा? March 20th को conclude होगा. Mr. Gandhi hopes to walk a few kilometers every day to interact with people, okay. तो उनका मकसद क्या है? What is he targeting? कि कुछ किलोमीटर he will be walking every day so that he can interact with people, लोगों से बातचीत कर सके, with the rest of the distance being covered in a bus, okay. और बाकी जो distance है वो कुछ किलोमीटर चलेंगे, और बाकी जो डिस्टेंस है, majority of the distance he will be covering in a bus. Okay, what is happening? So मेरी एक टीचर मुझे 1 ईयर से बोल रही है कर लो, आज भी बोला। क्या कर लो? आपको फार्मा कोर्स से रिलेटेड कुछ पता है क्या? नहीं अपूर्वा, आई हैव नो आइडिया। ओके, तो आप क्या क्या सोच रहे हो करने का अपूर्वा? क्या क्या कर लोगे आप? The yatra takes 11 days in the northeast region. Okay, 11 दिन northeast, once a stronghold. पहले किसका dominance था? कांग्रेस का था. Okay, grip उनका था, but now dominated by बीजेपी। ओके, भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स एलाइज। ओके, पहले बीजेपी का था, सॉरी, पहले कांग्रेस का वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, डोमिनेशन था, अब बीजेपी का डोमिनेशन है। तो 11 दिन वो वहां स्पेंड करेंगे। इट विल cover nearly 900 kilometer in Assam, a state that the Congress lost to the BJP in 2016 after an uninterrupted 15-year rule before entering Bengal. Okay, तो सब जगह का थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रहा है कि बेसिकली ऑथर इज गिविंग अ लिटिल बिट डिटेल कि कहाँ पर बीजेपी का डोमिनेंस है, कहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ करता था। ओके, तो आसाम इज अगेन 15 ईयर उनका कांग्रेस का डोमिनेंस था, उसके बाद फिर 2016 में बीजेपी स्टार्टेड रूलिंग, और उसके बाद फिर ये बंगाल एंटर करेंगे। 900 किलोमीटर आसाम में कवर करेंगे। ओके, इन उत्तर प्रदेश मिस्टर गांधी विल ड्रम अप सपोर्ट यूपी में फॉर हिज सोशल जस्टिस प्लैंक बाय रीचिंग आउट टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज अराउंड द डिमांड टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस। ओके, सो बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इन यूपी, ओके, उत्तर प्रदेश में इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सोशल जस्टिस डिमांड करेंगे। यहाँ पर ये वोट किस अपनी तरफ सपोर्ट किस तरह बटोरेंगे? बाय अपीलिंग टू दी ओबीसी। ओके, ओबीसी क्लास को अपील करेंगे कि इनको इनके लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। यहाँ पर कास्ट सेंसस एक्यूरेट नहीं है, तो एक कास्ट सेंसस होना चाहिए। ही विल बी रीचिंग आउट टू दी ओबीसीज, एंड दिस इज हाउ ही विल बी drumming a vote there. Okay, at a time when the BJP campaign, okay, now the author is talking about कि ऐसे समय पे जब बीजेपी कैंपेन hinges on, बीजेपी का जो कैंपेन है किस चीज पे हिंज कर रहा है, किस चीज पे बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बीजेपी का कैंपेन? ओपनिंग ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या। ओके, तो ऐसे टाइम पे जब बीजेपी का मेन फोकस क्या है? राम मंदिर इन अयोध्या, उस पे फोकस कर रहे हैं। द कांग्रेस इज ट्राइंग टू wield
its newfound plank of caste justice as a counter. Okay, so basically कांग्रेस इस समय क्या करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी का पूरा कैंपेन क्या है, किस चीज के अराउंड बेस्ड है, राम मंदिर के इन अयोध्या में के अराउंड बेस्ड है। ओके, तो कांग्रेस इसको क्या करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपना नया मकसद, ओके, नया प्रिंसिपल दैट इज कास्ट जस्टिस, ओके, उस पे इस चीज को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। ओके, there is no better place than Uttar Pradesh to test the potency of social justice as a currency for political mobilization. And Mr. Gandhi will also be confronted with the question of contesting from Amethi Lok Sabha constituency that he lost in 2019 or any other in the state. Okay, so basically अगर इस पूरे पॉलिसी को, ये जो इन्होंने काउंटर करने का सोचा है कि हम इसको काउंटर कैसे करेंगे, बाय टॉकिंग अबाउट कास्ट जस्टिस, ओके, तो इसको टेस्ट करने का और कोई बेटर प्लेस नहीं है दैन उत्तर प्रदेश। ओके, वहीं पर पता चल जाएगा कि इनका सपोर्ट, इनको इस पॉलिसी से सपोर्ट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ओके, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो पाएगा इस बेसिस पे कि नहीं हो पाएगा। ओके, हेलो अविरल, हेलो, हेलो। Mr. Gandhi hope Mr. Gandhi's hope is that public attention will focus on inflation, okay, inflation, lack of jobs, and the alleged marginalization of social groups such as Dalit, Adivasis, OBCs, and minorities. Okay, so basically, Mr. Gandhi क्या होप कर रहे हैं कि ये जो पब्लिक अटेंशन, ये किस किस चीज पे फोकस करेंगे, पब्लिक का अटेंशन इन्फ्लेशन पे फोकस करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस पे फोकस करेंगे, अलेजेड मतलब ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि बट मार्जिनलाइजेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, इन इन ग्रुप्स को दबाया जा रहा है, दलित, आदिवासीज एंड ओबीसीज को दबाया जा रहा है और अदर माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है अलेजेडली, इस चीज पे भी फोकस करेंगे। ओके, he and the party want to dissociate the yatra from any immediate electoral calculations for the impending Lok Sabha election and to imagine it as part of an ideological challenge to the Rashtriya Swayam Sevak Sangh BJP combine. Okay, तो बेसिकली ये दिखाना ये चाह रहे हैं, इसमें इनका मकसद ये है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है आने वाले इलेक्शन से। ओके, अभी जो लोकसभा इलेक्शन आएगा उससे इसका कोई कोई रिलेशन नहीं है और ये कैलकुलेटेड मूव उसके लिए नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ कैलकुलेटेड मूव फॉर द लोकसभा इलेक्शन। ओके, और इसको ऐसे देखना चाहिए, ऐसे इनको दर्शाना है लोगों को कि ये एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। ओके, आइडियोलॉजीज का चैलेंज है। ओके, कि क्या हम किस चीज पे हम भरोसा रखते हैं, किस चीज पे हम विश्वास करते हैं एज बीइंग पार्ट ऑफ कांग्रेस, एंड व्हाट डू द अदर पार्टीज। ओके, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी किस चीज पे विश्वास रखते हैं। ओके, हाउ आर द आइडियोलॉजीज डिफरेंट। ओके, दिस इज व्हाट हिज फोकस इज। ओके, while it is true that politics tailored solely to win election can be costly for society in multiple ways, the other extreme of disregarding electoral contest is counterproductive. Okay, ये बात तो सच है कि मतलब ऐसी कोई मूव, ओके, ऐसा कोई मूव जो कंप्लीटली बस इलेक्शन जीतने के लिए किया जाता है, वो तो डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू प्रूव वेरी नाइस। ओके, फॉर द अच्छा नहीं दिखने वाला है, इट इज गोइंग टू बी महंगा पड़ने वाला है, लेकिन उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड भी कर देना, ओके, कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए हम ये सब कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड भी करना इज ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव। ओके, दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि ये भी करना एकदम सही नहीं है। ओके, कि एकदम कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं इलेक्शन से, हमारा मकसद ही कुछ और है, ऐसा कह देना इज ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव। ओके, इससे भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ओके, आफ्टर ऑल इलेक्शंस आर ऑल्सो टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजीज, इलेक्शंस भी तो इसी चीज का टेस्ट होता है। आफ्टर ऑल दी ऑथर इज सेइंग कि अगर देखा जाए तो इलेक्शंस भी तो यही चीज का टेस्ट होता है कि कितने डिफरेंट है आइडियोलॉजीज और किस आइडियोलॉजीज पे आप भरोसा रखते हो, उस पार्टी को आप वोट देते हो, राइट? तो किसकी आइडियोलॉजीज पे आप भरोसा करते हो और उनको वोट देते हो। ओके, द फर्स्ट लेग ऑफ द यात्रा
the first leg of the yatra that traversed the country vertically, okay, so जिसमें ये vertically गए थे, okay, from the south to the north, okay, earned Mr. Gandhi goodwill and possibly helped the Congress with win Telangana in a surprise turnaround of its fortunes, okay. So basically अब ऑथर बोल रहा है कि देखो जो फर्स्ट लेग था इस पूरे यात्रा का, ओके, जिसमें ये साउथ से नॉर्थ गए थे, उसमें इनको बहुत ज्यादा गुडविल की प्राप्ति हुई। लोग मिस्टर गांधी के बारे में अच्छा सोचने लगे, ओके। सो उनको बहुत इससे फायदा भी हुआ है, और कांग्रेस को प्रोबेबली इलेक्शन तेलंगाना में सरप्राइज टर्न अबाउट अराउंड से इन्होंने जीत लिया तेलंगाना में इलेक्शंस भी, ओके। But the party lost to BJP in Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, where the ideological battle is sharp. Okay, तो लेकिन कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी से हार गई, ओके, जहां पर आइडियोलॉजिकल बैटल बहुत शार्प है, ओके, कि किस आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते, किस वैल्यू पे ज्यादा विश्वास रखते, ये बहुत ज्यादा शार्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां ये हार गई, ओके। थ्रू दिस यात्रा Through this yatra, Mr. Gandhi will have to reinforce his position as the most credible challenger to Prime Minister Narendra Modi, but that is not sufficient to forge a viable election strategy for the opposition. Okay, ये यात्रा से इस यात्रा से मिस्टर गांधी को ये दिखाना होगा कि वो बहुत उन पे विश्वास किया जा सकता है एज एन ओपोनेंट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये दिखाना तो होगा ही, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। ये स्ट्रैटेजी बस काफी नहीं होगा इलेक्शन जीतने के लिए, ओके, ऑपोजिशन से इलेक्शन जीतने के लिए। द क्वेश्चन इज वेदर मिस्टर गांधी कैन कवर दैट डिस्टेंस, ओके। सो he has to do a lot more, okay। तो basically ये metaphorical distance के बारे में भी बात कर रहा है, okay। Basically this is like a pun, okay, so जिसमें actual distance के बारे में भी बात की जा रही है, where he's covering the horizontal distance, okay। इस बार वो वाला डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं। क्या ये एक्स्ट्रा माइल जाएंगे टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ क्रेडिबल चैलेंजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एज वेल एज गिव a lot more than just proving an ideal contender, okay। इससे ज्यादा भी कर पाएंगे कि नहीं, ये डिस्टेंस देखना है कि कवर कर पाएंगे मिस्टर गांधी की नहीं, okay। So this is the question that the author ends it with, okay। All right, so that is the entire editorial। अब हम देखते हैं इस editorial का what do you think the tone is of this editorial। Okay, Navasha, that's absolutely fine। Last option मेरा female LP, okay। Skeptical। हम्म लेकिन skeptical से ज्यादा if we take it, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? एडवाइजरी सबसे ज्यादा होगा, ओके। Okay, because he's advising Mr. Gandhi to take the extra step, okay। उसके अलावा skeptical भी होगा, whether he will be able to take it or not is a good question, okay। Critical तो नहीं होगा because the author is not really criticizing Mr. Gandhi or Prime Minister Modi, okay। So he's not criticizing any political party as well।
Political is the type of editorial, okay? किस चीज पे लिखा गया, that is the genre of the editorial. It is written on political, ठीक है नवाशा? But हम टोन ऑथर का देखने की कोशिश करें कि किस टोन से बात कर रहा है ऑथर, ओके? सो इट विल बी पूर्व सॉल्व होने लगेंगे, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ओके? यस, टोन इज डिफरेंट, ठीक है? तो आप समझ जाओगे नवाशा, डोंट वरी, वी विल हैव अ सेशन, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि टोन कैसे क्या होता है। बट गुड अटेम्प्ट, गुड जॉब दैट यू आर स्टिल, सॉरी महक, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है? तो आपको समझ में आने लगेगा, ओके? सो एडवाइजरी और स्केप्टिकल होगा द इंटायर एडिटोरियल, ओके? एनालिटिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली एडवाइजरी एंड स्केप्टिकल, ओके? All right, so that is it for skeptical is उनको डाउट आ रहा है, ओके? डाउट आ रहा है कि क्या ये कर पाएंगे ऐसा, ओके? स्केप्टिकल अबाउट समथिंग इज बेसिकली हैविंग डाउट्स और डाउट्स रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ समथिंग, ओके? ठीक है? All right, so that is it for today. Thank you everyone for attending the session. Bye bye, merci, merci beaucoup. Auf Wiedersehen, au revoir. Bye bye. मेरे सेंटेंस का क्या, कौन सा सेंटेंस? Very nice, Ravneet. But I just see your conversation with Apurva. Mm, opposition was solely based on the ideology and no proof, said the. Okay. Opposition's allegations were solely based on their ideology and no proof. Um, said the CM in the rally. He also stated that the investigations have been impending since forever now, and it is not enough for dissociating people from the real believing in with dissociating people from believing in our in their ambitions, in our ambition. Their baseless talks have been completely disregarded by the citizens. Okay, Ramni, the second half made little sense, but good job, good job, good job, good job. All right, so that is it. Good, Ravneet, you are doing fantastic these days. I'm proud of you. Very nice. All the best, everyone. Bye bye. See you. Take care. Tata. Au revoir.